नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम 20 मिनट फुल बॉडी फ्लो करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटेंस सेशन होने वाला है, जहां पर आपके 300 से 500 कैलोरीज बर्न हो जाएंगे। एज द नेम सजेस्ट फ्लो, हम उसमें फ्लो करने वाले हैं और आपको रुकना नहीं है। दिस विल बी द फॉलो अलोंग वीडियो, तो आपको मेरे साथ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो। आपको मैट के स्टार्टिंग एज पे खड़ा रहना है ताकि आपके सब पोस्चर्स मैट पे आ जाएंगे। यू हैव टू टेक शोल्डर विद डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ द लेग्स। आप वार्म अप करना ना भूलें। हम डायरेक्टली फ्लो से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर विद डिस्टेंस, इनहेल अप, बेंड बैक। एज यू एक्सेल, hands leaning forward, hips back into chair pose. Hold it in 3, 2, 1. Touch both your hands down and lock both your legs straight. Try to hold your ankles. Try to take your head in. सामने देखना है, दोनों हाथों को नीचे टच करना है एंड यू हैव टू जंप बैक। अगर आपको घुटने में कोई परेशानी है तो यू कैन टेक वन बाय वन योर लेग बैक इन प्लैंक। होल्ड प्लैंक फॉर 5, 4, 3, 2, 1. Adjust your right hand to the center and we are going to turn into side plank. Hold it in 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ नीचे. Now adjust your left hand to the center and turn to the other side. Hold it in 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ नीचे in plank. You have to pull your body, upper body into downward dog, keeping your heels down, ताकि आपके hamstring पे stretch आ जाएगा. Pull your body in as much as you can and inhale. Roll your body forward and go into Bhujangasana. Try not to touch your thighs down. Hold it. अगर आपको पॉसिबल हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो एंगेज योर कोर एंड स्लोली गेट अप इन प्लैंक. अगेन गेट बैक इनटू डाउनवर्ड डॉग. पुल योर बैक इन एज मच एज यू कैन. रोल योर बॉडी फॉरवर्ड एंड गेट इनटू भुजंगासन. होल्ड इट इन 5, इन 4. ये तरीके का भुजंगासन करने से आपके आर्म्स पे, थाइस पे और कोर पे स्ट्रेच आ जाएगा. गेट इनटू प्लैंक इन डाउनवर्ड डॉग. अभी आपको आपका राइट लेग अप करना है. ट्राई टू टेक योर लेग अप. आप आपकी कैपेसिटी से पैर अपना स्ट्रेच कर सकते हो. राइट लेग अप, स्ट्रेच इट हाई अप इन 3, 2, and take that leg directly in front, in between both your hands into pyramid pose. अगर आपको पॉसिबल हो रहा है तो try to touch your forehead to your knee. अदरवाइज आप ऐसे भी रह सकते हो. आपके हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आ जाएगा. होल्ड इट इन 3, 2, 1. From pyramid pose you have to go into triangle pose, Trikonasana, in 3, 2, 1. Touch your hand down. Take your right leg back. Pull your back into downward dog. Now take your left leg up. Stretch it up in 3, 2, 1. Take your leg in between both your hands. Try to touch your forehead to your knee. Hold it in 3, 2, 1. Your other hand up into triangle pose in 3,
2, 1. Both your hands down. अभी आपको दोनों पैरों को आगे लेके आना है into chair pose. Again, this time close both your hands into Namaste position and we are going to turn, twist to your right side such that your right elbow should touch your left knee. Twist it in 3, 2, 1. Center the other side such that your elbow should touch your knee and twist. Hold in 3. आपके glutes पे, आपके thighs पे stretch आ जाएगा. In 2, 1. To the center. Again, both your legs straight. If possible, you can close your legs. या तो आप distance भी रख सकते हैं दोनों पैरों में shoulder width. And now you have to lift your right leg up. Hold it. ये पैर आपको सीधा रखना है. Hold it in 3. तभी आपके hamstring पे stretch आ जाएगा. In 2, 1 and down. Your left leg up. जो पैर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, you have to squeeze your glute so that आपके glute पे और hamstring पे stretch आ जाएगा. Hold it in 3, 2, 1 and touch it down. Once again, right leg up, stretch it in 3, 2, 1. Touch it down, directly back and get up into warrior pose. Hold warrior pose in 3, 2, 1. Go down sideways in 3, 2, 1 to the center. Reverse warrior. आपके sides पे, thighs पे और inner thighs पे stretch आना चाहिए. In 3, 2, 1 to the center. Turn and arch. In 3, 2, 1 and get up. Go down. दोनों पैर आगे. Once again, lock your legs. Touch your forehead to your knee. And now we will be lifting your left leg up. Take it up. Hold in 3, 2, 1. Touch it down. Get up into warrior pose. Hold it in 3 and 2. Warrior pose में आप alignment check करना एक बार. Knees should be bent from here. You will get stretch on this leg, on this quadricep and inner thighs. 2, 1. Bend sideways. आपके sides पे, leg पे, inner thigh पे stretch आ जाएगा. 2, 1 to the center. Reverse warrior pose. Stretch it in 3. इस side पे stretch आना चाहिए. Also on this side. 2, 1 to the center. Turn and arch. In 3, 2, 1. Exhale down. Take both your legs back. Go down on your knees and relax in Balasana. बालासन एक पोज भी है and also it is a relaxing posture. Hold it in 3, 2, 1. As you get up, go into Bhujangasana. In 3, 2, 1. Again get up. Go in Balasana. In 3, 2, 1. Come forward into Bhujangasana. In 5, 4, 3, 2, 1. Get up on your knees in tabletop position. Tabletop से हम कैटन का पोज करेंगे. Inhale up. Look up. Hold it in 3,
2, 1. Exhale. Roll your back up. Tuck your pelvic in 3, 2, 1. Once again, inhale up. In 3, 2, 1. Exhale. In 3, in 2, 1. Once again, inhale up. In 3, 2, 1. Exhale. In 3, 2, 1. From tabletop, we will go into Chaturanga, directly down on your chest. Your toes touch, knees touch, chest and chin. In 3, 2, 1. From Chaturanga, push yourself up and back in Balasana. Again, up in tabletop, down on your chest. 3, 2, 1. Push yourself straight up and go back in Balasana. Once again, for the last time, get up, straight down on your chest. Hold it in 3, 2, 1. Push yourself straight up in tabletop position. Now, from tabletop, you just have to lift your knees slightly up. आपके thighs, core और arms पे stretch आ जाएगा. Hold it in 5, 4, 3, 2, 1 and down. Normal breathe. Once again, lift your knees up and hold in 5, 4, 3, 2, 1 and touch your knees down. Normal breathing. Once again, repeat the same. Lift your knees slightly up. आपको downward dog में नहीं जाना है. You have to hold this position in 5, 4, 3, 2, 1 and down. Again, relax into Balasana. Normal breathe here. Now from Balasana, get into tabletop and you have to open up your right leg and your left hand. Open it in 3, stretch it in 2, 1. Take it down in 3, 2, 1. Once again, open it in 3, 2, 1. Take it down in 3. Try to touch your forehead to your knee. You can even take support like this or just hold it freely. 2, 1 and down. Normal breathe. Now the same, we are going to repeat it with your other side. Open up your leg. Remember, this should be opposite. अगर आप right leg उठा रहे हो तो हाथ left hand ही होना चाहिए. Hold it in 3, 2, 1. Crunch it down in 3, 2, 1. Open it up in 3, 2, 1. Crunch it down in 3, 2, 1. And relax in Balasana. Normal breathe here. So from Balasana, get up and now we are going to do forearm plank. उसके लिए आपको आपके forearms पे आना है. Lift your hips up. Hold it for 5, 4, 3, 2, 1. We are going to take our hips to our right side. From right to left. Left to right ताकि आपके sides, obliques और core पे stretch आ जाएगा. To your left, to your right side and to your left side.
touch your knees down, get up on your palms, and now we are going to get up on our knees. Both our hands in front and आपको आपकी पूरी बॉडी straight back लेके आनी है. ओके, नॉट जस्ट बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक. तो यहां से हमें नीचे आना है एंड इन फ्रंट. अगेन टेक योर बॉडी बैक. इधर से आपको पीछे आना है. थाइस से आपको आपकी बॉडी होल्ड करनी है एंड अप. अगेन गो बैक and up on your palms. In downward dog, walk in front and take distance in between both your legs. Sit in Malasana. Hold Malasana in 3, 2, 1. From Malasana, दोनों हाथों को आगे लेके जाते हुए you have to sit down into Naukasana. Hold it in 3, 2, 1. Right leg down. 3, 2, 1. Change it in 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 3, 2, 1. दोनों पैर नीचे. Your hands in front in 3, in 2, 1, and slowly lie down on your back. Relax here. Now you have to lift both your legs up, toes pointing towards ceiling in 3, 2, towards your face in 3, 2. Again towards ceiling in 3, 2, 1. Towards your face in 3, 2, 1. Open up your legs, both your knees closer to your chest and your toes should be visible. आपको ऐसे नहीं करना है. You compulsory have to take your legs like this so that your toes are visible to your eyes, not like this. Stretch it up, तभी जाके आपके thighs पे stretch आ जाएगा. Again 2. Stretch it up. 3. Stretch it up. ये करते समय आपको आपके thighs पे stretch आना important है. Take it up. 4. Take it up. 5. Stretch it up. And now hold your toes. Open it up into split pose. जितना आपसे पॉसिबल होगा उतना आपको ओपन करना है. अगर आपकी ये कैपेसिटी है, ये लिमिट है, तो यू कैन होल्ड इट हियर. इफ यू कैन एक्सटेंड, ट्राई टू टच योर टोज डाउन टू द फ्लोर. फ्रॉम स्प्लिट वी आर गोइंग टू गो इनटू हैप्पी बेबी पोज. होल्ड इट इन 5, 4, in 3, 2, 1 and close your legs. Get into Naukasana in 3, 2, 1. Touch your legs down. Put your body weight forward and stand up. And Namaste. So this flow was designed as such कि beginners भी इसे easily कर सकते हैं. ये फ्लो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें आपकी स्ट्रेंथ, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आता है. एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस. अगर आप ये फ्लो इजीली कर पा रहे हो तो यू कैन रिपीट इट फॉर ट्वाइस ताकि आपकी मोर कैलोरीज बर्न हो सके. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.